say that if you dream it, you can achieve it. No dream is small or no dream is big. And there is someone who's proved this absolutely right. I have with me, and I'm actually very honored to have with me, Manya Singh, who is the Femina Miss India 2020 runners up. And I'm sure you've all heard her name, you've all heard her story, but let's hear it from her. And the reason that she's inspired so many people is simply because of her story, which has had a resonance with so many people who are watching this or have heard about it. Manya, it's our pleasure to have you with us. Firstly, we want to Thank start by you. congratulating you. How are you feeling? I am feeling really grateful. Like God has given me this opportunity, and a way I'm really blessed that I'm in right hand. And Miss India organization are blessings for me. They are keeping me like their daughter, and they are like my new family. And I'm ready to roll on. And I'm really looking forward for the great experience. And I must say, the crown is really suiting you. You look beautiful, Manya. But as I Thank said, that you. when I started, that it's your story which has had resonance with so many people. Every year there are a bunch of girls who get crowned, but we don't really talk about them the way we are, simply because of the humble beginnings that you had and the fact that you're so proud about it. You take so much pride of the upbringing that you've had with your parents and with your family. How much credit of your win do you give it to your family and your parents? I always say that I've worked 20% hard, and my because of my parents, 80% they have done a lot, like their sacrifices, their compromises, their everything, their adjustment, their like they have given me their own piece of bread so that I can fill my own tummy and I can work harder. So I can say that 80% of their hard work, that's why I'm here. Well, that's lovely to hear. Manya, in India, unfortunately, there are still a lot of stereotypes. The minute we talk about a Miss India or a beauty pageant, there are certain stereotypes that, a lot of us work with. While growing up, was it challenging? Because one, you had a lot to prove, not just for yourself, but your family, but you had to battle a lot of these stereotypes as well. Ever since childhood, I didn't have a privileged life, but yeah, I've enjoyed my childhood to being a very special child of God, because Hmm. He has given me very difficult hurdles in my life. So I've Hmm. learned from it that, Hmm. and I have groomed myself a strong woman, because since childhood I've been very matured, and I knew Hmm. my responsibility, that what I have to do. I knew that what I was very clear in my mind that I am going to be Miss India one day, and that's why I worked harder. I knew from this from the start that the journey will not be easy, but I Hmm. have to be very hard, and I have to be working like day and night, everything. Manya, a lot of young girls get attracted to beauty pageants, to the crown because of, the visibility that it gives them. What was that one thing that made you so sure that you're ready to overcome all challenges because you won that crown? What was that one thing that attracted you so much? I can say that me and my life, because I have come through my life as a victor, Hmm. not as a survivor. Like I can say that I am a victory. I have got a victory from my life. Hmm. So that thing, I knew that I didn't expected that people will get inspired at that level, but I knew that Hmm. if I share my story, people will definitely get inspired. And the one thing I knew, that this crown comes with responsibility, and the responsibility which I have to be a voice of every woman out there, because I know if you don't have this voice, what it takes, like what it feels Hmm. like. So I have suffered all these hurdles in my life, so that's why I wanted to do something different. And I knew that Miss India stage will give me that responsibility and the opportunity to be a voice of every woman out there. मान्या जब हम लोग इस ब्यूटी पेजेंट्स के लिए लड़कियां जाती हैं तो some of them come from a lot of maybe more privileged background. Some of them already have experience in say modeling. They must have done something in the college level. कभी आपको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत झिझक थी कि बहुत लोग जो आएंगे वो मुझसे ज्यादा अकम्प्लिश होंगे? थोड़ा सा ये चैलेंजिंग था या आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कर लिया था कि ये सब मैटर ही नहीं करा? मुझे पता था, कंपटीशन में आने से पहले मुझे पता था कि लड़कियां वेल प्रिजर्व फैमिली से आएंगी, जो अदर स्टेट के विनर्स होंगी काफी हम्म. स्ट्रांग होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी,
बहुत सारे कपड़े होंगे उनके पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेकअप्स होंगे, बट मुझे खुद पे भरोसा था कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे, लाइक दिस इज नॉट जस्ट 2 or 3 years ऑफ ड्रीम, ये 2 या 3 साल का सपना नहीं है, ये लाइक 20 साल का सपना बोल सकती हूँ मैं। और मुझे पता था कि 20 साल के सपने के लिए मैंने 40 साल वाली मेहनत की है। तो ये कपड़े और मेकअप से तो मैं पीछे नहीं रहूंगी, अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि एवरी स्टेज, लाइक हर स्टेज आपको चाहता है कि यू शुड बी रियल। Absolutely. If so, I kept myself every time. I kept myself very simple, very classy. Like I have always wore more than clothes. मैंने अपना कॉन्फिडेंस पहना था, Absolutely. अपनी पैशन को पहना था, अपनी स्माइल को पहना था, और प्राउड था कि आज मैं जो भी यहाँ खड़ी हूँ वो मैं अपने अपने मेहनत पे खड़ी हूँ, और हर बिल्कुल। लड़की मेहनत करके वहां पे आई है। तो वो कंपटीशन मुझे उन लड़कियों के साथ नहीं था, हमेशा से मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज हम सब एक बहनें थी और एक फैमिली की तरह साथ में थी। कंपटीशन मुझे खुद से था कि मैं उस जर्नी में बेस्ट आउट ऑफ मान्या कैसे ला सकती हूँ, कि फिनाले के दिन सबको शॉक कर दूं कि ओ, शी इज मान्या सिंह, मिस उत्तर प्रदेश। You know, Manya, I think that's the reason why so many people have fallen in love with you. They love your story. And this is what I said when I started that, you had very humble bringings, but you still have been, so proud about it. Your father's an auto driver. You had many challenges yourself. You worked in, a Pizza Hut, a call center, all of that. Was there any time that you started to doubt yourself that maybe have I dreamed a little too big or will it actually be so easy? Was there any moment where you thought that I don't know if I'll be able to achieve this or not? मुझे डाउट नहीं था, लेकिन लोगों को मुझ पे था। कभी कभी मेरे पेरेंट्स भी डगमगा जाते थे कि बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, बहुत सारे दरवाजे मेरे मुंह पे बंद हुए थे, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यू डोंट लुक लाइक अ मिस इंडिया, पहले तुम छोटे छोटे पैजेंट में पार्टिसिपेट करो तब देखेंगे। तो मुझे खुद पे पूरा भरोसा था। आई हैव नेवर डाउटेड ऑन माई सेल्फ कि नहीं 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 होगा। कभी कभी डिमोटिवेशन आता था, फिर खुद को मैं बोलती थी इट्स ओके मानी, यू जस्ट हैव टू डस्ट योरसेल्फ एंड जस्ट पिक अप योरसेल्फ एंड लेट्स गो। क्योंकि आसान नहीं है रास्ता, क्योंकि पैर और हाथ मेरे थक जाते थे। आई यूज्ड टू I'm वॉक sure. ऑलमोस्ट 8 or 9 kilometers रेगुलर बेसिस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड फॉर ऑडिशंस। तो हमेशा से ऐसे बॉडी छोड़ देती थी साथ, तो बोलती थी अब नहीं, अब थक गई हूँ मैं, बट फिर अंदर से वो आती थी कि नहीं, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, यू हैव टू वर्क मोर हार्डर एंड बी रेडी फॉर इट। तो लोगों ने मुझे कहा कि यू डोंट लुक लाइक अ मिस इंडिया, तो मैंने खुद पे कभी डाउट नहीं किया, Which लोगों ने is so किया। nice. बट मुझे ये पता कि लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती थी। इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट। Looks very, it's so difficult to believe because itna competitive ye space hai. The space is so competitive. Everybody wants to win the crown. To not lose your focus is very, very important. Manya, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आपने लिखा था कि लोग बात करते हैं कि my dad is an auto driver, but there were also days in my life that I didn't even have the money to take an auto ride. So I would walk miles and miles. How difficult were those days? ऑल्दो मेरे फादर ऑटो ड्राइवर हैं, बट मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट रही हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी पहले से ही, बचपन से ही। तो कभी भी अगर मुझे कहीं जाना रहता था तो मैं नहीं बोलती थी अपने फादर को, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो मैं अपने कॉलेज के बाद तुरंत ट्रेन, मुंबई में ट्रेन, लाइक आई स्वेयर ट्रैवलिंग बहुत सस्ता है मुंबई में। तो मेरे पास 10 से 15 रुपए रहते थे जो मैं ट्रेन से ट्रैवल करती थी। और मैं आई कैन से दैट अंधेरी स्टेशन से यशराज स्टूडियो जितना दूर रहता था, उससे डबल डबल डिस्टेंस में चलती थी, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं ट्रैवलिंग करूंगी तो 80-90 रुपए गिरेंगे, वो 80-90 रुपए में भी मैं किसी और ऑडिशंस में बचा दूंगी। तो वो सब पैसे बचाते बचाते बहुत सेविंग्स की आदत लग गई मुझे, एंड वो एक पैशन था कि यार कोई ना, करना ये ही है धूप अब भी तो। मुझे, हाँ, भगवान लाइक रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मंजिल जिस दिन मिलेगी उस दिन आंख रुकने वाली नहीं है। और दैट्स द सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई गॉट क्राउन्ड एज रनर अप। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मुझे पता था कि आई ऑलरेडी हैव इनविजिबल क्राउन, जो हर एक औरत के पास होता है। How तो lovely. मैंने फिनाले के पहले मैंने अपने फादर से, मेरी मॉम ने मुझे मैसेज किया था वॉइस रिकॉर्ड करके, मैंने किसी से बात नहीं किया था। तो मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि बेटा, just be grounded, be yourself,
और Sure. ऐसे परफॉर्म करना कि आपकी लाइफ का लास्ट परफॉर्मेंस हो। बिल्कुल। और अपना सर हमेशा ऊंचा रखना, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि आपने Absolutely. यहाँ तक आए हो और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मुझे Absolutely. हिम्मत था, मैं बहुत रो भी रही थी। I'm sure आपके parents must be not just proud, but they must be so happy with the upbringing that they've given you and how you've turned out to be this beautiful, independent, confident woman who we all feel so proud looking at you, Manya. But I have to ask you this, ever since you won the crown, of course, you've done a lot of interviews. Everybody's spoken about your story. Do you think कहीं ना कहीं maybe your story has overshadowed who you are as an individual, and is that something that you want people to now talk about? I'm like, मेरी story ही मेरा part है, but it doesn't define me. And every time, in every interview, I make sure that मेरी story मुझे define नहीं करती है. जी. मेरी story मुझे strong बनाती है, and Hmm. that makes me like prove that I worth for this crown. Yeah. So it's like something different. लोग मेरी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, बट ये भी बोलते हैं कि शी हैज कम थ्रू अ लॉन्ग वे। तो दे Absolutely. न्यू दैट कि मैं अपनी स्टोरी पे ही डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरी जितनी भी बैक स्टोरी रही है उससे मैं आगे आज ये क्राउन पहन के बैठी Absolutely. हूँ, क्योंकि I have believed in myself. So that's why people got inspired, and मुझे इस पे ही भरोसा है कि लोग मेरे स्टोरी से ज्यादा मुझे आज जैसे मैं दिखती हूँ, मैं जैसे ही बोलती हूँ, मैं जैसी हूँ एज अ पर्सन, उसे देख के ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो that's like something very grateful, and yes, I love you all guys. So, who is Manya without the crown? What are you when you're not giving these interviews? Tell us something that you love to do in your free time. I'm sure अभी तो आपको इतना free time नहीं मिल रहा होगा, interview, shoots ये सब. But if you have your free time, what does Manya like to do? I'm very simple. Even with the crown, I'm very simple. I like जब मेरे पास कुछ नहीं होता है करने को, I sit and I just think about myself. Like मुझे क्या Hmm. करना चाहिए, फिर मैं बुक्स Hmm. पढ़ती हूँ, फिर Hmm. मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, फिर टीवी देखती रहती हूँ, मुझे टीवी भी Hmm. बहुत पसंद है। तो ये बहुत बहुत सिंपल है, मैं नॉर्मल लड़की ही हूँ उन लोगों की तरह, और आई कैन से दैट मैं क्राउन के साथ भी हर लड़की की तरह ही हूँ, क्योंकि ये विजिबल के पास इनविजिबल क्राउन है, यू ऑल्सो हैव। How lovely. Manya, I will, wrap this up by asking what is next for you? Most of the people who, win titles in the beauty pageants, they see this as a stepping stone to movies, to Bollywood. Is that something that you've already given a thought about? जर्नी आगे आने वाली जर्नी भी आसान नहीं होगी, तो मुझे जो भी अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मैं दोनों हाथ खोल के वेलकम करूंगी। और अब माने अपनी जान लगाने वाली है हर बार की तरह, तो मुझे पता है कि मैं जो भी करूंगी, लड़कियां या लड़के या कोई भी इंस्पायर के, तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आई एम मेकिंग वर्क फॉर दिस क्राउन, एंड आई मेक श्योर दैट पीपल शुड लर्न दिस, दैट इफ मान्या कैन डू, आई कैन टू। How lovely, how lovely. Manya, I'll wrap this up by थैंक congratulating यू। you once again and all our best थैंक wishes यू। for all your future endeavors as well. Thank you so much for taking out our time and talking to us here. थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।